वीकली करंट अफेयर्स जीके जीएस फॉर जुडिशरी, और ये होगा हमारा 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक का। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 5 अक्टूबर। इंडियन टीचर्स डे 5 सितंबर को और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर और वर्ल्ड में जब बात आ जाती है तो 5 अक्टूबर। World Teachers Day is observed every year on 5th October. In the year 1994, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) proclaimed October 5 as World Teachers Day. Next, which institution released a concept note on the Central Bank Digital Guarantee (CBDC)? Correct answer is Reserve Bank of India. What is the name of the first made in India light combat helicopters inducted in Indian Air Force? Prachanda. Who has won Nobel Prize 2022 in Literature? Annie Arnox. Annie Arnox. ठीक है, next. Made in India droning has been manufactured by which company? Correct answer is Garuda Aerospace. Which village has been declared as India's first 24/7 solar powered village? Modhera. Prime Minister Narendra Modi has declared Modhera in Gujarat's Mehsana district as India's first 24/7 solar powered village. Modhera will be country's first round-the-clock solar-powered village involved in developing a ground-mounted solar power plant and more than 1,300 rooftop solar systems on the residential and government buildings. Who won Sastra Ramanujan Prize 2022? यूंकिंग टैंग। ठीक है, शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 किसने जीता? यूंकिंग टैंग, शस्त्र यूंकिंग टैंग। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट काडावुर स्लेंडर लोरिस सैंक्चुरी? तमिलनाडु। काडावुर स्लेंडर लोरिस सैंक्चुरी, तमिलनाडु। काडावुर स्लेंडर लोरिस सैंक्चुरी, तमिलनाडु। Modhera, which was declared as India's first 24/7 solar powered village, is located in which state? UT किस स्टेट में है मोधेरा? गुजरात में। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा मोधेरा कहाँ पे? गुजरात में। Telemanus initiative, which was launched recently, is associated with which field? Mental health. टेलीमानस किससे संबंधित है? मेंटल हेल्थ से। टेलीमानस मेंटल हेल्थ। Asola Bhati Wildlife Sanctuary, where leopards were spotted, is located in which state? Asola Bhati Wildlife Sanctuary किस स्टेट में है? न्यू दिल्ली। Asola Bhati Wildlife Sanctuary, न्यू दिल्ली। Asola Bhati Wildlife Sanctuary, न्यू दिल्ली। Who is set to take over as the 50th Chief Justice of India (CJI) after Justice UU Lalit? Justice D.Y. Chandrachud. Mahakal Lok project, which was inaugurated recently, is located in which state? Madhya Pradesh. Mahakal Lok project, Madhya Pradesh. Which union ministry is associated with One Nation, One Grid, One Frequency and One National Load Dispatch Center? Ministry of Power. PM Divine scheme, which was seen in the news, aimed at development of which region? Northeastern regions. Pitt Island, where hundreds of pilot whales were stranded dead, is located in which country? New Zealand. पिट आइलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। पिट आइलैंड किस देश में है? न्यूजीलैंड। आइए अब जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो कि 1969 में इसका ये बना था, इसरो बना था 1969 में। सुपरसीटेड द अर्स्टवाइल इनकोस्पार, पहले था इनकोस्पार, 1969 में नाम रख दिया गया इसरो। ठीक है, इसरो का
इस नाम रखा गया, इसरो की स्थापना हुई। पहले क्या था, इन कोस्पार। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन। पीपल, इंडस सिविलाइजेशन में जो भी सील्स मिल रहे हैं उस पे किस ट्री का शेप है, पीपल ट्री का, पीपल के पेड़ का, इंडस वाली सिविलाइजेशन में, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। द ट्री फाउंड इन द सील्स फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ पीपल ट्री। The unique feature of whose administrative system was the development of village autonomy. Cholas, okay, Chola administrative system had the unique feature of development of village autonomy. The Chola dynasty was essentially monarchical in character, where the king was at the below of the administration and all executive, legislative, and military powers rested with him. To which period do the sites of Ellora and Elephanta belongs? Rashtrakoot, Ellora and Elephanta, Rashtrakoot, Ellora and Elephanta, Rashtrakoot. The sites of Ellora and Elephanta belongs to Rashtrakoot rulers. They have been built by cutting the walls of high basalt steep rock walls, which Chandela king faced Mahmud Ghaznavi, Vidyadhar. Where does Sargasso Sea situated? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सरगासो सी कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। सरगासो सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सरगासो सी इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस? स्विज कैनल। द स्विज कैनल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट। कहाँ पर है स्विज कैनल? इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट। कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी through the Isthmus of Suez and dividing Africa and Asia. It is the route of trade between Europe and Asia. Who among the following, which one is not a young folded mountain? Young folded mountain कौन नहीं है? Sierra Nevada, Rocky, Himalaya या Alps? Correct answer is Sierra Nevada. The Himalayas, the Alps and the Andes and the Rockies are some examples of young folded mountains, while the Aravalli Range, the Appalachian and the Ural are examples of some old folded mountains. Which of the following countries is divided by McMahon line? McMahon line के द्वारा कौन से countries divided है? India and China. McMahon line, India and China. McMahon line marks the boundary between India and China. McMahon line was named after Lieutenant Colonel Sir Arthur Henry McMahon. Comptroller and Auditor General of India submits its reports relating to accounts of the unions to, किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? कौन? CAG, Comptroller and Auditor General of India. Chief Justice को, Prime Minister, Vice President या none of the above? Correct answer is none of the above. The reports of the CAG of India relating to the accounts of the union shall be submitted to the President of India, who shall cause them to be laid before each House of Parliament. CAG अपना रिपोर्ट President of India को सबमिट करता है, ठीक है। Chairperson and member of the State Public Service Commission are appointed by, किसके द्वारा? By Governor. Chairperson and member of the State Public Service Commission, State Public Service Commission अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, स्टेट है, ठीक है। The word to abide and respect used under the provisions of Article 51A of the Constitution of India is concerned with, किससे concerned है? To abide and respect, जो कि आर्टिकल 51A में यूज हुआ है, वो concerned है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 51A of the Constitution of India is concerned to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. Which of the following constitution amendments was the first constitutional amendment which was rectified by the state legislatures according to the requirements of the provision of the Article 368 Clause 2 of the Constitution? Correct answer is third constitutional amendment, 1954. Article 368 2E of the Indian Constitution says the provision of this article, the amendment shall also require to be ratified by the legislature of not less than one half of the states by resolution to that effect passed by those legislatures before the bill making provision for such amendment is presented to the President for assent. The power of Supreme Court of India to decide the disputes between center and states falls under which jurisdiction? Appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, constitutional jurisdiction या original jurisdiction? Correct answer is original jurisdiction, option D.
The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its original jurisdiction. It means the power to hear and determine a dispute in first instance. Original jurisdiction होता है. Mid-day meal scheme was launched in which year? 1995. मिड डे मील कब लॉन्च किया गया? 1995 में. मिड डे मील 1995 में. द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE was launched as a centrally sponsored scheme on 15th August 1995. In October 2007, NPNSPE was renamed as National Program of Midday Meal in Schools, which popularly known as Midday Meal Scheme. कहने का मतलब है कि आज की डेट में जो मिड डे मील जो हम लोग जानते हैं, ये ओरिजिनली 1995 15 अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन. आई रिपीट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE. ठीक है. नेक्स्ट, 2007 में इसका नेम चेंज कर दिया गया, अक्टूबर 2007 में. ठीक है, अक्टूबर 2007 में नेम चेंज किया गया. लॉन्च किया गया 1995 में. अक्टूबर 2007 में नाम चेंज कर दिया गया. किसका? मिड डे मील का. आज के डेट में नाम है मिड डे मील. विच इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. करेक्ट आंसर इज रूटर. A database that contains the names and address of various hosts on internet is called domain name system. In which year भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर? भोपाल गैस डिजास्टर किस ईयर में ऑकर हुआ? 1981, 82, 83 या 84? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1984. भोपाल गैस डिजास्टर 1984 में ऑकर हुआ. The Bhopal gas disaster was a chemical accident on the night of 2-3 December 1984. 2-3 दिसंबर की रात की बात है. ये केमिकल एक्सीडेंट था एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड. ठीक है, भोपाल में. इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड? टेस्टिस. ठीक है. वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. यूनिसेफ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क. यूनिसेफ न्यूयॉर्क. ठीक है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क. द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क कहाँ पर है? USA में है. यूनिसेफ्स activities included providing immunizations and disease prevention, enhancing childhood and material nutrition, administering treatment for children and mothers with HIV, improving sanitation, promoting education, etc. In which organ hydrochloric acid is secreted? HCl किस organ में secrete होता है? Stomach में. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस organ में secrete होता है? Stomach में. किस लिए secrete होता है? और stomach का काम क्या होता है? stomach का काम होता है पेट का काम, खाना को पचाना, जो कि HCl एक एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि खाना को पचाता है, मतलब पचाने के दौरान सीक्रेट होता है. वन ऑफ द केमिकल्स है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय पैरिटल सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टोमक. द pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज 1.5 एंड 3.5 इन ह्यूमन स्टोमक. ठीक है. स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय विच विटामिन? विटामिन सी. किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है. ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी. द लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी डिजीज इन ह्यूमन. विटामिन सी इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे चीज़ खाने में होते हैं, उनमें विटामिन सी पाए जाते हैं अक्सर. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस? कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस किसने कहा? लाला लाजपत राय. Lala Lajpat Rai criticized Congress by saying the Congress conference as the annual national festival of educated Indians. From which ashram did Mahatma Gandhi start Dandi March? Dandi March महात्मा गांधी जी ने किस आश्रम से स्टार्ट किया? साबरमती. ठीक है, डैंडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ? साबरमती से. The Dandi March which was started on 12th March 1930. डैंडी मार्च कब हुआ था? 1930 में. 1930. डैंडी मार्च 1930, 12 मार्च 1930. डैंडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 12th मार्च 1930, 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड रीच्ड डैंडी ऑन 6th अप्रैल 1930. 6 अप्रैल को पहुंच गया. डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भिंड. ठीक है, भिंड. In Madhya Pradesh, Bhind has the minimum sex ratio which is only 837, while Balaghat has the maximum sex ratio of 1021. सबसे मिनिमम पे भिंड, MP की बात हो रही है.
एमपी में भिंड, और मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सेक्स रेशियो? बालाघाट। भिंड एंड बालाघाट दोनों बी से स्टार्ट होगा। भिंड छोटा है तो यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, बालाघाट थोड़ा सा बड़ा है, वो वर्ड देखिए तो सेक्स रेशियो बड़ा है। ये याद करने के लिए थोड़ा सा फनी सा ट्रिक आपको बता रहे हैं। भिंड में मिनिमम है, बालाघाट में मैक्सिमम है। ओके, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? 11। ये जो क्वेश्चन है ये एमपी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के एमपी में भी पूछे जाते हैं। सो कुछ वो भी इंसर्ट कर दिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स एंड 5 क्रॉप जोन्स in which belt the volcanic eruption is maximum. Circum-Pacific. Volcanic eruption is maximum in circum-Pacific. Circum-Pacific belt also referred to as the ring of fire. रिंग ऑफ फायर किस बेल्ट को कहा जाता है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। सर्कम पैसिफिक बेल्ट also referred to as the ring of fire is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. In which of the following years was the second round table conference in London held? 1931. In which of the following years was the Planning Commission of India set up? 1915. The Planning Commission was constituted in March 1915 by a resolution of the Government of India and works under the overall guidance of the National Development Council. Electron volt is the unit of energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड nuclear physics, equal to the energy gained by an electron, a charged particle carrying unit electronic charge, when the electrical potential at the electron increases by 1 volt. Which is the structural and functional unit of kidney? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लास 6-7 के बायोलॉजी बुक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब उल हिंद that gave an incisive description of early 11th century India? अल बिरूनी। किताब उल हिंद किसने लिखा? अल बिरूनी ने। किताब उल हिंद, अल बिरूनी। Al Biruni's Kitab ul Hind, written in Arabic, is simple and elucidative. It is a voluminous text divided into 80 chapters on subjects such as religion and philosophy, festival, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and meteorology. Which of the following states has largest wetland area as percent of total geographical area of the state in the country? Gujarat. Largest wetland area? Gujarat. 17.56% of geographical area of Gujarat is under wetlands, followed by West Bengal 12.48%, Assam 9.74%, Uttar Pradesh 5.16%. If the velocity of a body is doubled, its kinetic energy becomes 4 times. क्योंकि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। ठीक है, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज गोनोरिया। अ जीन इज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट अ ट्रेल। ठीक है, अ जीन इज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट अ ट्रेल। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।